नमस्कार दर्शक बंधु ओडिया नॉलेज एकेडमी यूट्यूब चैनल को आपण मानक स्वागत। आपण जदि आम चैनल को प्रथम आछंती दयाकोरी चैनल सब्सक्राइब बटन क्लिक करी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। वीडियोटी भल लगे निश्चय वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे भूलिए जहाँद्वारा आप प्रतिदिन नुआ नुआ अपडेट पाइपर। देखो आज गुरुत्वपूर्ण खबर पर नजर पकेबे जो कि सुप्रीम कोर्ट को गुरुत्वपूर्ण राय आसी माननीय सुप्रीम कोर्ट को राज्य कर्मचारी कहीपर गोटे भल खबर बोली। तो दयाक वीडियो को शेष पर्यटन देखिए जहाँद्वारा आप संपूर्ण खबर विषय में जानीपर। तो चलतु आरंभ करिए आज खबर। देखो डेट ऑफ एम्प्लॉई डेथ रिलीवेंट फैक्टर जो रही व्हाइल सिकिंग अपॉइंटमेंट आज पर रिहेबिलिटेशन असिस्टेंट स्कीम जो रही सुप्रीम कोर्ट ये अपहोल्ड ओडिशा हाईकोर्ट जो डिसीजन देते ताकू कायम रखिंट से विषय में देखा। तो सुप्रीम कोर्ट इश्यूड डायरेक्शन रिगार्डिंग the appointment extending the benefit of rehabilitation assistance scheme as per the amended rule जो रही 2025 in ओडिशा। तो से विषय देखिए द सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड द ओडिशा हाई कोर्ट जजमेंट जो रही दैट हेल्ड दैट द डेट ऑफ डेथ ऑफ एम्प्लॉई जो रही रिलेवेंट फैक्टर कंसीडरिंग अंडर रिहेबिलिटेशन असिस्टेंट आउ अपॉइंटमेंट जो स्कीम रही ओडिशा सरकार द सुप्रीम कोर्ट डील्ड with a batch of appeal regarding grant of appointment under Odisha Civil Services Rehabilitation Assistant Rule जो रही एटी कहते ए बेंच ऑफ जस्टिस जेके महेश्वरी एंड जस्टिस अरविंद कुमार ऑब्जर्व आफ्टर हियरिंग लॉन एडवोकेट जनरल एंड लॉन एडवोकेट अपियरिंग फॉर रेस्पोंडेंट एंड बिस्टोइंग आवर कंसिडरेशन इन आवर व्यू द डायरेक्शन जो रही निर्देश देते इश्यू इन ऑर्डर द इम्पोज फाइन फोर्स फ्रॉम द अमेंडमेंट रूल नोटिफाइड जोटा 4/4/2025 referred above. Therefore we are inclined to maintain the order of the high court order जो थिला ताकू मेंटेन करछन सुप्रीम कोर्ट टू डिस्पोज ऑल दिस अपील विथ द फॉलोइंग डायरेक्शन और रिसीविंग द एप्लीकेशन as mentioned above the appropriate authority जो रहिजंती shall examine the cases of individual respondent in term of to the 2025 amendment rule and pass appropriate order. It is needless to say that the application जो रही so filed shall not be rejected and technical ground and shall be considered करा sympathetically strict in accordance with the rule अनुसार ताकू consider करिवे सरकार। The respondent had filed the writ petition before High Court Odisha seeking appointment on compensate ground Odisha जो सरकार को नियम रही which regular recruitment to state civil services post as a measure of rehabilitation assistant. The said rule made the member of the family deceased employee जे थिबे जो सरकारी कर्मचारी को डेथ है eligible for appointment on compensate ground in case of the family is financially distressed. लेटर जोटा कि 2016-2020 होता द रूल वेयर अमेंडेड ताक परिवर्तन कराइला। हाउ द कंटेंशन ऑफ द रेस्पोंडेंट बिफोर द हाई कोर्ट ऑफ ओडिशा was regarding the decision of the state to deal with the application of rehabilitation assistance in accordance with the 2020 rules in the case where employee have died during the subsequent of rule 1990 रूल अनुसार भितर से मृत्युवरण करते। द हाई कोर्ट ओडिशा emphasized that the date of death of the deceased employee would be relevant factor कर्मचारी जन जेबे मृत्युवरण करते सेटा रिलेवेंट फैक्टर हिसाब ने द केस ऑफ द रेस्पोंडेंट शाल बी कंसीडर अप्लाइंग जोटा कि 1990 रूल अनुसार नॉट आज पर द 2020 रूल थस बीइंग एग्रीड बाय द सेम द स्टेट प्रिफर्ड अपील बिफोर द सुप्रीम कोर्ट रे राज्य सरकार एटा को अपील करथिले। कोर्ट एटी एनालिसिस करथिले द क्वेश्चन बिफोर द सुप्रीम कोर्ट वाज वेदर डायरेक्शन इश्यू बाय द हाई कोर्ट इन ऑर्डर टू वारंट इंटरफेस इन द ओडिशा सिविल सर्विसेज जो रूल 2020 रूल अच्छी ताकू फॉलो करने जो रही सरकार अपील करते। द कोर्ट नोटेड दैट द एडवोकेट जनरल गेव एन एश्योरेंस रिगार्डिंग द फॉर्मुलेशन ऑफ न्यू पॉलिसी विथ इन द इंटेंट टू प्रोवाइड बेनिफिट द रेस्पोंडेंट टू डायरेक्ट बाय द हाई कोर्ट अंडर द रूल ऑफ प्रिविलेंट एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ एम्प्लॉई। देयरफॉर द अमेंडेड रूल जो रही नोटिफाइड जोटा एप्रिल 4/2025 होता बाय द जनरल एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक ग्रीवेंस डिपार्टमेंट। At the moment, Law Advocate General appearing for the state has assured that the officer of the state shall apply the notification जोटा 4/4/2025 report to above muted mundis in the case of all the respondent and dispute regarding the grant of appointment under the rule applicable on the date of
death would be considered in term of the direction if any issue by the court said. एटी मध्य माननीय सुप्रीम कोर्ट कहते द कोर्ट हेल्ड दैट they were inclined to maintain the order of the High Court and dispose all the appeal within the following direction among other. On receiving application as mentioned above, appropriate authorities shall examine cases individual respondent in term of 2025 amended rule, pass appropriate order, जोटा कि appropriate order pass करेंगे. It needless to say the application so filed shall not be rejected on technical grounds, shall be considered sympathetically, strictly in accordance with the rule. से अनुसार देखिए in case of the post is available, the competent authority shall pass an order of appointment order देबे. Otherwise the procedure as prescribed in the relevant rule shall be followed and thereafter the respondent be permitted to join their duty within the time specified. It देखिए the appointment already granted by the government extending the benefit of rehabilitation assistance scheme shall remain unaffected by the direction of the content herein above. Further, in case of claim of individual respondent is rejected by the authority, they are liberty to take recourse of law as per permissible. The direction or issue would apply mutatis mutandis in all pending cases. Accordingly, the writ petition before the High Court as well as appeal before the Supreme Court were disposed. एटा गोटे गुरुत्वपूर्ण राय देथिले माननीय सुप्रीम कोर्ट. तो आज खबर आपको केमती लगे दयाकर निश्चय वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे भूलें जहाँद्वारा आप प्रतिदिन नुआ नुआ अपडेट पाइपर. धन्यवाद.